Hello, welcome students. We are studying the structure of DNA. In the last episode, we have studied that DNA has 4 bases, that is adenine, thymine, guanine and cytosine. There are 4 bases: adenine, thymine, guanine and cytosine. Understand? How they arranged, we have already discussed that this is adenine, this is a thymine, this is guanine, this is cytosine. Means one is parallel, next one is pyrimidine. They are attached each other by hydrogen bond. They are attached each other by hydrogen bonds. In between A and T, 2 hydrogen bonds, and between G and C, 3 hydrogen bonds. And this adenine is attached to the sugar, that is deoxyribose, by means of glycosidic bond, which I have already told you in the last video. The glycosidic bond in both sides. Deoxyribose sugar. Then there is a nitrogenous base, and the nitrogenous base attached with the glucose by means of glycosidic bond. Here, and there is a presence and there is a pyrimidine. Their attachment is 9th position nitrogen, and their attachment is 1st position nitrogen. Means first carbon is attached with the 9th position नाइट्रोजन, यानी पहला पोजीशन का कार्बन डिऑक्सीराइबोज का 9वें पोजीशन पे जो नाइट्रोजन होता है उससे मिला होता है, और इसमें पहले पोजीशन पे जो कार्बन होता है वह फर्स्ट पोजीशन पे पिरिमिडिन्स में जो नाइट्रोजन होता है उसमें मिला होता है, जो कल हम बता चुके हैं. नाउ these sugars are combined with each other by means of phosphate. They are combined with each other by means of phosphate. I have already told you that these are by means of 3' and 5'. The attachment is like that. So this is a complete nucleotide in the same way. In the same way that phosphorus is attached. Understand? And the structure I have given you in the last video, that we see somewhat details that A, T, G, C, T, A, C, G. These are deoxyribose sugar. These sugars are composed by phosphate or phosphoric acid. So this is the structure of nucleotides of DNA, and how the base are arranged
the model was first given by Watson and Crick. The model, how they arranged, was first given by Watson and Crick, and the model is like that. This is a double helical structure. These are called helix. So, double helical structure. These are double helical in a coil forms. Understand? And their rotation is usually clockwise. And now you see the helix 1 and helix 2. There are two helices. That is the main symbols to identify the DNA. Means we know that two nucleic acid, one is DNA and next one is RNA. This is double helical and this is single helical. Understand? So the first the points for identification, this both nucleic acid, if that is double DNA, double helix, that will be DNA, and if it is single helix, that will be ribonucleic acid. Now, this is the there's a, you see how this is coiling, and you see that this is a complete diameter and it is of 20 angstrom and half is radius 10 angstrom. Understand? And then you see here is more space, here is less space. Understand? So these are called major group or long shallow. And this is, here you see this position is minor group or short shallow, and this is from here to here, that is, this one is major group. Understand? And from this, suppose from this point to complete from this, that is, this is a complete coil. This is a complete rotation, and the length of one complete rotation is 34 angstrom, and one of complete rotation is 34 angstrom, means from here to here, or from here to this one, or from here to this one. This is complete rotation, means distance of one complete rotation is 34 angstrom, and you know that 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter. So the distance between that is 1, and between one rotation there are 10 nucleotides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Means it contains 10 nucleotides or 10 base pairs. So in the 34 angstrom we get
10 nucleotide. So the distance between two nucleotide will be 34 by 10 is equal to 3.4 angstrom. एक कंप्लीट घुमाव में, एक कंप्लीट टर्न में, समझे, कंप्लीट रोटेशन मीन्स एक कंप्लीट घुमाव में क्या होता है, जिसका डिस्टेंस क्या होता है 34 एंगस्ट्रॉम्स होते हैं, इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर होते हैं। तो इस हिसाब से दो के बीच का डिस्टेंस 34/10 यानी 3.4 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो इस हिसाब से ये टोटल जो है व्यवस्था इनकी सजी होती है और ये क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ऊपर से देखा जाए हम जो फ्रॉम द बर्ड साइड ऊपर से, तो इस तरह घूमते हुए दिखाई देंगे। हम जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो ऐसे, और उसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन जो बेस है इसके सब जो है सजे होंगे। मान लो यहाँ ए है तो यहाँ टी होगा, जी सी, हम ए टी जी सी, इसी हिसाब से ए टी जी सी का, लेकिन पेयरिंग हमेशा ए के साथ टी और जी के साथ सी का होगा। अगर इसमें चेंज होता है तो दैट इज कॉज म्यूटेशन, अंडरस्टैंड, तो वो म्यूटेशन में चला जाएगा, लेकिन इन द नॉर्मल डीएनए दैट विल बी फाउंड इन दैट पोजीशन। तो हम क्या देखें कि ये बेस पेयर के मिलने से बना होता है, समझे, जो एटीजीसी यानी ये पेरेंट्स हो गया, ये पेरिमिडिन्स हो गया, ये दोनों साइड आपस में नाइट्रोजनस शुगर से जुटे होते हैं और दो आपस में फॉस्फेट से जुटे होते हैं, जिसका स्ट्रक्चर कल मैंने बता दिया कंप्लीट, समझे। और ये जो है एक कॉइलिंग स्ट्रक्चर में होते हैं कुंडलित में, जिसके जो मॉडल जो है वाटसन एंड क्रिक दिया, जिसकी टोटल डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होती है, समझे, और रेडियस अबाउट 10 एंगस्ट्रॉम वाला। और ये एक घुमाव के जैसा होता है, कॉइल कुंडली के जैसी, समझे। और एक कंप्लीट घुमाव जिसकी लंबाई कितनी होती है, लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम, समझे, 1 एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻10 मीटर। और इस 34 एंगस्ट्रॉम के बीच 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और इस हिसाब से 34/10 यानी 3.4, इसमें दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 3.4 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो इस तरह ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए की पहचान है हम देखते हैं। Now types of DNA. How many types of DNA? So DNA is divided on into two. Okay, DNA are found in two types. One is that different on the basis of function, and second on the basis of number of nucleotides in इस टर्न। एक घुमाव में कितने न्यूक्लियोटाइड्स है उसकी संख्या के बेस पे बांटा गया है, समझे, और एक उसके फंक्शन के बेस पे बांटा गया है, समझे। दिस फर्स्ट वी सी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हम जानते हैं, अभी स्टडी किए कि दैट इन द डिस्टेंस ऑफ वन टर्न, समझे, this is the one turn and the distance is 34 angstrom and 10 nucleotides we have seen, understands। तो ये जो है, तो इसमें संख्या क्या होता है, अलग अलग होती है। इसका मतलब क्या कि ये एक घुमाव में इसकी संख्या अलग अलग होती है, तभी तो अलग अलग टाइप्स होते हैं, समझे। नाउ वी सी हाउ दे सम ऑन दैट नंबर द डीएनए इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स, समझे। So DNA is divided into 5 types on the basis of number of nucleotides in each car. That is type A,
DNA A, DNA B, DNA C, DNA D, and DNA Z. There are 5 types of DNA. Which one? That is DNA A, DNA B, DNA C, DNA D, DNA A. So DNA are 5 types: A, B, C, D, and Z. Now we see in each terms how many nucleotides. So number of nucleotides in each complete term. It is 11, B 10, which is normal we have seen. In the C, that is 9.33. In the D, this is 8 and this is 12. That is easy to remember, but you think that now what it means the 9.33, how is calculate? सोचते होंगे ये सी में 9.33 कैसे आ गया, समझे? संख्या तो 1 2 3 के हिसाब से हम गिनते हैं, समझे? लेकिन ये क्या था एक्चुअली, ये होता क्या है इसमें one turns, 2 turns, 3 टर्न्स हो गए, समझे? यहां से यहां 3 कंप्लीट टर्न्स हो गए और तीनों मिलके 30 न्यूक्लियोटाइड, समझे? कितना था? 9.28 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, समझे? तीनों मिलके कितना होते हैं? 28 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, समझे? अब 28 जब न्यूक्लियोटाइड्स हो गए यहां से यहां तक, तो एक एक का टर्न इसका हो गया 28/3 यानी 9, 1/3 यानी 9.3। तो इस हिसाब से टर्न इसका यानी 3 गिनने के बाद कंप्लीट नंबर हमें मिलता है, समझे? तो इसलिए ये क्या होता है, इसलिए 9.33 आगे समझ में। तो so this is the number of nucleotides: 11 in A, 10 in B, 9.33 in C, 8 in D, and 12 in Z. These two are Lorentz commons. Second, rotation of coil. What is the rotation of coil? Either clockwise or anti-clockwise. Either clockwise or anti-clockwise. So these are clockwise. Clockwise. This is also clockwise. This is also clockwise. This is also clockwise. And this is anti-clockwise. So these are clockwise, clockwise, they all are clockwise, and this is anti-clockwise. Understand? So this is the different types of DNA on the basis of number of nucleotides. Now next one, on the basis of functions. The DNA performs 2 types of function. One is responsible for the reproduction, and other is the next one is responsible for the other functions except reproduction. एक होता है, समझे, जो अन्य सभी कामों को देखेगा एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन,
और एक है जो रिप्रोडक्शन में इनहेरिटेंस का काम देखेगा, समझे, इनहेरिटेंस, दैट इज नॉन एज genetic DNA, and this is known as trophic DNA. This is called it will responsible for the inheritance of characters through reproductions, and it will perform all the other functions except reproduction. रिप्रोडक्शन के अलावा बाकी जो काम जो डीएनए कंट्रोल करता है दैट इज नॉन एज ट्रॉफिक डीएनए, और जो रिप्रोडक्शन में इनहेरिटेंस का काम करता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स में भाग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डीएनए. तो जेनेटिक डीएनए यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. नाउ द ट्रॉफिक डीएनए, समझे हाउ दैट परफॉर्म्स. एक चीज है कि ट्रॉफिक डीएनए का एग्जाम्पल जो है, हम इसमें क्या नाम है, एक छोटा ये वन सेड ये है जिसको हम कहते हैं, हाँ चलो हमें ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हम इसका स्पष्ट फंक्शन देख पाते हैं. इन द this is the paramecium. You will study it, you will get it has two types of nucleus. समझे, तुम देखा था when you will study that it will contain two types of, one is big in size and next one is small in size. The big one is called macronucleus and the smaller one is called micronucleus. तो दो एग्जाम्पल इस पर दिखाई दे, वन इज macronucleus, the second one is micronucleus. This micronucleus is responsible for, समझे, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स. यानी ये जो है जेनेटिक फंक्शन में काम करता है, और बाकी उसके अलावा अन्य जो भी काम है दैट विल परफॉर्म्स बाय मैक्रोन्यूक्लियस. तो मैक्रोन्यूक्लियस बाकी कामों को देखता है. और ये तो इसे यहाँ एग्जाम्पल एक हम पाते हैं, हम जो स्पष्ट, ऐसे हाई एनिमल्स में नहीं मिल पाता है हमने, लेकिन इसमें हमें स्पष्ट दिखाई देता है. यहाँ दो न्यूक्लियस है, one is a small in size and one is big in size. The small in size is micronucleus and is responsible for the genetic inheritance, and the micronucleus is responsible for all the other activities. So these are type, means all the other activities are except reproductions are controlled by trophic DNA, and the reproduction is inheritance of characters is controlled by genetic DNA. So that are the types of DNA.